Hi everyone, in this video I will discuss about polariton and LST relation. Okay, इस क्वेश्चन को ऐसा भी दे सकता है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ ऑप्टिकल मोड, दोनों तरीके से क्वेश्चन को दे सकता है. फर्स्ट टाइप इज discuss polariton and give the expression of LST relation, or you can say Lyddane-Sachs-Taylor relation. Second type of question is interaction of electromagnetic waves with optical modes. Okay, दोनों का आंसर सेम होगा. So इस बैनर में, in this banner of polariton, first I discuss definition of polariton, then I will discuss about properties of some properties of polariton, then the dispersion relation curve of polariton, what are the type of polariton. Okay, I will discuss, and lastly I discuss mathematical representation of polariton, or we can say LST relation. Okay, so what is polariton? Our first topic is definition. So what is polariton? So when transverse optical phonons and transverse electromagnetic wave are at resonance condition, then the phonon-photon coupling occur. This quantum of the phonon-photon coupling is called polariton. Okay, so our next topic is properties of polariton. So what are the properties? Actually, polariton is a bosonic quasi-particle. This is the first property. Second property is polariton formed when photons couple strongly with exciton, and last property is phonon-photon coupling can be expressed by dielectric function. Okay, these are the properties. And our next topic is dispersion relation curve of polariton. So suppose this is the dielectric function, and we know dielectric function given by epsilon, defined by epsilon omega. Okay, so this is the graph, actually curve of dispersion relation of polariton, and this axis is omega by omega t. Okay, so this y axis is dielectric function and this x axis is omega by omega t. This is the curve, dispersion relation curve. Okay, so next topic is type of polariton. So what are the type of polariton? There are actually different type of polariton. So I just here described here some most important type of polariton. Okay, there are several type of polariton. Okay, so I discuss actually most common type of polariton. Okay, so first type of polariton is phonon polariton. So here in this case phonon polariton will be occurring with coupling of infrared photon with optical phonon. This is the polariton when infrared photon coupling with optical phonon. Okay, we can say next type of polariton is exciton polariton. तो यहाँ पर क्या होता है, कपलिंग किसके साथ किसके होता है, कपलिंग विथ विजिबल लाइट विथ रेस्पेक्ट ऑफ एक्साइटन. पिछले वाला में क्या हो रहा था, पिछले वाला इज द फोनोन पोलारिटन. तो कपलिंग किसके किसके बीच में हो रहा था, इंफ्रारेड फोटोन with respect of optical phonon. But in this case exciton polariton, here coupling will be occur with visible light with respect to exciton. So next type of polariton is intersuevant polariton. So here coupling किसके किसके बीच में होता है, visible light with respect to infrared photon. In the case of surface plasmon polariton, this polariton result from coupling of surface plasmon with light.
in the case of Bragg polariton, result from coupling of Bragg photon with bulk exciton. Here in the case of magnon polariton, result from coupling of magnon with light. Okay, so now our last topic is mathematical representation of polariton. Okay, or we can say LST expression of LST. Okay, relation. So what here I first actually we use equation of electromagnetic wave and we use equation of motion of polarization. These two equation I used. So first equation is according to electromagnetic wave equation we have, actually we know electromagnetic wave equation is c square k square E is equals to omega square E plus 4 pi P. Okay, here P is polarization, and E is the electric field of the phonon. Electric field of the phonon. So now I use the equation of motion of polarization. So now from equation of motion of polarization we have what we have omega t square p minus omega square p is equals to n q square by m e. This is equation 2. Here n is the number of ion pairs, number of ion pairs, and q is effective mass. U is effective mass. M is reduced mass. So solution of equation 1 and 2 we can write. Then solution of equation 1 and 2 we can write determinant of c square k square minus of omega square 4 pi omega square n q square by m omega t square by omega square is equals to 0. इसको हम कैसे लिखे इस एक्सप्रेशन को, इसको हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की मदद से लिखे. कैसे लिखे देखिए इक्वेशन, इसको हम रैप कर देते हैं. कैसे लिखे, इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 में सी स्क्वायर के स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ई प्लस 4 पाई पी. इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, सिंपली हम पोलराइजेशन टर्म को कोएफिशिएंट ऑफ पोलराइजेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कोएफिशिएंट है उसका हम डिटर्मिनेंट करेंगे. उसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कोएफिशिएंट ऑफ पोलराइजेशन का जो कोएफिशिएंट होगा उसका हम डिटर्मिनेंट करेंगे. ओके, सो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. सी स्क्वायर के स्क्वायर ई माइनस ऑफ इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ई प्लस ओमेगा स्क्वायर 4 पाई पी. ओके,
सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर 4 पाई पी इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस ई ओमेगा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू 0। ये पहले हम लिख सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ पी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ पी इज ओमेगा स्क्वायर 4 पाई ओमेगा स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ ई इज ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर ई। तो आप देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इस साइड में हमने क्या किया, इस साइड पे हम कोएफिशिएंट ऑफ ई को लिया एंड इस साइड पे हमने कोएफिशिएंट ऑफ पी को लिए। कोएफिशिएंट ऑफ पी इज 4 पाई ओमेगा स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ ई इज ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर ई, इसको लिए। ओके, सिमिलरली क्या करेंगे, सिमिलरली हम इक्वेशन 2 की मदद से इसको लिखेंगे, सेम प्रोसीड्यूर होगा। ओके, यहाँ पर हमने कुछ गलत किए होंगे, स्क्वायर ई, अच्छा ऐसा भी लिख सकते हैं, वहाँ पर भी इस पैटर्न पे, वहाँ पर भी शायद यहाँ पर माइनस होगा, इस पैटर्न पे अगर करेंगे फिर माइनस माइनस कॉमन कर देंगे रो के अंदर, इसको इसी को लिखते हैं। ठीक है, इसका तब इसको इसका जो कोएफिशिएंट हुआ, इसका कोएफिशिएंट से क्या लिखेंगे हम, ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर के स्क्वायर ई ओमेगा स्क्वायर 4 पाई। ये हो गया पहला इक्वेशन की मदद से हम लिखे। अब सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या है, इक्वेशन ऑफ पोलराइजेशन। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, यहाँ पर भी हम P कॉमन ले लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू ओमेगा टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ एन क्यू स्क्वायर एम एन क्यू स्क्वायर एम ई इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पर P का कोएफिशिएंट क्या है, ओमेगा टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड E का कोएफिशिएंट क्या है, एन क्यू स्क्वायर बाई एम। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस साइड पे हमने क्या किए थे, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ ओमेगा, तो यहाँ पर सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ ई, तो कोएफिशिएंट ऑफ ई इज माइनस ऑफ एन क्यू स्क्वायर एम एंड दिस साइड इज फॉर कोएफिशिएंट ऑफ पी पोलराइजेशन। सो यहाँ पर पोलराइजेशन का कोएफिशिएंट की क्या है, ओमेगा टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, आप देखिए इसका जो सॉल्यूशन है, यहाँ पर ये प्लस है, तो सिंपली हम इस कॉलम को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस कॉलम को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म आ गया। यहाँ पर ई नहीं होगा, कोएफिशिएंट ऑफ ई ले रहे हैं ना, तो ई नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इन क्यू स्क्वायर बाई एम। तो ये सॉल्यूशन आ गया। कैसे आया, इस मेथड से आया। ओके ओके, सो ये रफ था, फॉर रफ नॉलेज। ओके, नाउ हम क्या करेंगे इस्तेमाल, हम यूज करेंगे सिंपली डाइलेक्ट्रिक फंक्शन के इक्वेशन यूज करेंगे और उसमें हम पोलराइजेशन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, अभी हम डेफिनेशन डाइलेक्ट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन यूज करेंगे और वहाँ पर जो पोलराइजेशन विथ हेल्प ऑफ इक्वेशन 2 आई जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पोलराइजेशन। ओके, सो but from definition of dielectric function, from definition of dielectric function, we have डाइलेक्ट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, इप्सिलॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू, वी नो एक्चुअली 1 प्लस 4 पाई पी बाई ई। P is polarization, is electric field. Okay, this will be equation 4. Now what I say, I just substitute the value of P, okay, with help of equation 2. So according to equation 2, what I have actually from equation 2 we have omega t square p minus omega square p
is equals to n q square by m e. ओके, यहाँ पर हम p सिंपली कॉमन ले लेते हैं, then we got omega t square minus omega square is equals to n q square by m e. Okay, so simply p will be n q square e by m divided by omega t square minus omega square. Okay, so what I do, I just substitute p's value in equation 4. Now we substitute value in equation 4, and we can write, and we can write what? Epsilon omega is equals to 1 plus 4 pi e into p का वैल्यू क्या है, n q square e divided by m divided by omega t square minus omega square. e काट जाएगा. Okay, so we can write actually epsilon omega is equals to 1 by 4 pi by m into n q square omega t square minus of omega square, and this will be equation, this is 4, so this will be equation 5. Okay, so in the infrared, now I find the expression of dielectric function in the infrared frequency range. So what I do in the case of infrared frequency range, I just, this one will be changed to epsilon infinity. What I say, in the range of infrared, this one replaced by epsilon infinity, and the whole equation remains same. Okay, so in the infrared frequency range, in the infrared frequency range, what is the equation? Equation 5. Okay, so equation 5 can be rewrite as, equation 5 can be rewrite as epsilon omega is equals to epsilon infinity plus 4 pi by m into n q square omega t square omega square, and this will be equation 6. So what I do, I just, whole equation remains same. Okay, here one will be changed to epsilon infinity. Okay, now what I do, actually now I finding static dielectric function. So how I find static dielectric function? Just I substitute omega is equals to 0, then this expression will be expressed as static dielectric function. What I say, just I substitute omega is equals to 0, then equation 6 called as static dielectric function. Okay, so what I write, so to finding static dielectric function, we just putting
omega is equals to 0 in equation 6. In equation 6, and we can write epsilon 0, epsilon infinity, just omega, just I substitute omega is equals to 0. So 4 pi by m into n q square omega t square. Okay, this epsilon omega term will be epsilon naught. Here this term will be actually neglect. Omega will be 0 because of omega is equals to 0. Okay, so this is equation 6. Thus from equation 6 and 7 we can write, thus from equation 6 and 7 we can write, what I can write, we can simply write epsilon omega is equals to epsilon infinity omega L square omega square by omega t square minus of omega square. Okay, this is equation 8, and here omega L is optical phonon frequency, optical phonon frequency. Now just I substitute here, again I substitute omega is equals to 0 to find LST equation. What I say, just I substituting omega is equals to 0 in equation 8, then the expression would be called as or celebrated as LST relation. Okay, if we putting, so if we putting omega is equals to 0 in equation 8, and we can write, and we can write what? What I say, just I substitute omega is equals to 0 in equation 8. Okay, so this equation will be epsilon naught, again this the term epsilon omega will be epsilon 0. Okay, epsilon 0 is equals to epsilon infinity omega L square minus 0 omega t square minus 0. Okay, this term will be 0. Okay, omega square. Okay, now I simplify this, so we can write omega L square by omega t square is equals to epsilon 0 by epsilon infinity. Here this result is celebrated as LST relation, or you can say LST sachs Taylor relation. Okay, so thank you for watching this video. Okay, thank you.